हेलो माय लवली डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। माइंडोलॉजी के एक नए वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज के बारे में विच इज हैपनिंग on a daily basis in our lives. Yes, with most of us, whether it is a personal life or professional, some or the other, it is happening. Yes, we're talking about conflicts. Yes. So conflicts एक ऐसी चीज है या कोई भी मतभेद होना या कुछ भी इस तरीके की चीजें होना जो लाइफ में होती ही रहती हैं. And one must know how to handle those conflicts. So in today's video, we are going to talk about some really important, useful, and helpful tips to handle the conflicts in a very tactful manner. So if you're interested in this topic and would like to know more about it, then I would request you to please watch this video and till end so that you can get the most of it. So let's start it. Welcome to Mindiology, the platform for skills, lifestyle, and career development. I'm your host, Sandoz Deepak from the team Mindiology. So let's start the video. So the first and the very, very important and the basic thing to handle any conflict is choosing your words. Yes, so choose your words wisely or carefully because it's very important आप क्या बात करते हैं किसी से, because कहीं पे अगर कोई झगड़ा कोई फसाद हो रहा है then आपको अगर वो हैंडल करना है, रिजॉल्व करना है, then you need to be very careful. You should not be using the words which will provoke, or ignite that conflict more. So that's very important कि choice of words क्या होना चाहिए. Okay? Moving on to the next thing which is very very important, that listen actively. आपको सुनना भी चाहिए actively कि हुआ क्या है, reason क्या है, वजह क्या है झगड़े की, क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से कोई भी कंफ्यूजन मिसकम्युनिकेशन हुआ है, वो तभी आप अच्छे से समझ सकते हैं व्हेन यू लिसन एक्टिवली. सो वहाँ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट स्टे काम एंड कंपोज. यस, ऐसी सिचुएशन में काम एंड कंपोज रहना बहुत ज़रूरी है. आई नो काफ़ी बार हम लोग एजिटेट होकर, एक्साइट होकर, रिपल्सिव हो जाते हैं, बट काम एंड कंपोज रहना ज़रूरी है इफ़ यू हैव द इंटेंशन टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट. अगर इंटेंशन कुछ अलग है, दैट रिजॉल्व नहीं करना, देन डेफिनेटली यू मे चूज द पाथ, बट रिजॉल्व के लिए काम एंड कंपोज होना ज़रूरी है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट you should seek common ground. Yes, common ground देखना ज़रूरी है कि क्या बात है, कहाँ पे दोनों पक्ष, दो भी जो पार्टी हैं या मे बी आप उसमें एक पार्टी हैं, वो कहाँ एक कॉमन बात पर अग्री कर रहे हैं, कहाँ पर एक कॉमनैलिटी आ रही है कि अच्छा आप इस पे अग्री करते हैं, हम इस पे अग्री करते हैं. ओके, सो देयर आर 3, 4 और 5, 6 थिंग्स वेयरइन वी आर अग्रीइंग अपॉन. सो वो कॉमन ग्राउंड देखना बहुत ज़रूरी है. Okay, moving on to the next thing which is very very important, that you need to maintain confidentiality. Yes, confidentiality maintain करना ज़रूरी है. ऐसा नहीं कि आपने आपस में किसी से आपका कुछ बात हुआ, then you're going to spread that thing across the world with different people, 10 different other people. So let's not do that because it definitely does not help you at all, especially when you have the intention to resolve that conflict. So it's very important. Okay? Moving on to the next thing which is very critical thing, that collaborate and compromise. Yes, आपको collaborate करना ज़रूरी है, एक अच्छे से उस चीज़ को सहयोग में करना ज़रूरी है, and compromise भी ज़रूरी है. You can't be having that, okay, this is my thing, I should be on the top in something. कहीं ना कहीं पे एक mediation की ज़रूरत पड़ती है, उसमें थोड़ा बहुत compromise भी होता है. So that scope should always be there, available, right? Moving on to the next thing which is very very important and crucial, that you must use the active communication. Yes, communication stop नहीं होनी चाहिए. Active communication, not that you're going via different routing or through somebody else. If you want to talk to someone about something, speak to them directly. So that very very important that it should be there. Okay? Moving on to the next thing which is very crucial, my friends, that involve a mediator if necessary. Yes, कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा कुछ critical चीज़ है जो आप नहीं directly देख कर पा रहे हैं, then there is no harm in involving a mediator if necessary. Then who can handle that? Maybe that person
whom you have a conflict with, or maybe somebody has not comfortable with the direct person. So maybe अगर कोई third person आता है तो definitely आप उसको अच्छे से resolve कर पाएंगे, because the person will definitely mediate between the parties. So it's very important. Okay. Very very important thing is the next thing, which is learn from experience. Yes, आपको अपने experiences से learn करना चाहिए कि कैसे क्या हुआ था. हो सकता है last time आपने कभी किया हो ना, आपसे कुछ गलती हुई हो, कोई mistakes हुई हो, उनसे learn करके आगे उनको repeat नहीं करना चाहिए. Okay. Last but not the least, which is very very important thing, that you should always stay positive. Yes, this is one thing which I always say in most of my videos, that positive rahiye, because the positivity ka jo effect hota hai, that's always and always, in a constructive manner. Because कहीं आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं, नेगेटिविटी आपके दिमाग में आती है, then eventually आप उस चीज़ को रिजॉल्व करने की बजाय बिगाड़ देते हैं. So it's very okay. That's it for today, my friends. I hope आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी. And if you are also, having that mindset to resolving the things like the conflicts and all, then you would also apply that. So if you found this video useful and helpful, then do share it with your friends, family, and colleagues so that they can also take help from this video and move ahead in life. And if you love the content of the videos of Mindiology and you like us, then please do subscribe to our channel and do not forget to hit the bell icon so that you can get the latest update from us always on time, my friends. And do share your feedbacks, suggestions, and comments into the comment box, or you can write us at infomindiology@gmail.com and let us know what you think and feel about Mindiology, because it's your own channel. So that's it for today, my friends. We shall meet next week with yet another interesting and knowledgeable episode for all of you. Till then, please keep loving Mindiology like you always do, and do take a very good care of yourself. I wish you a wonderful and a blessed day ahead. Bye-bye.